Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Peshawar Model School. This is lecture number 2 of chapter number 1, that is quadratic equation of mathematics. So, in the previous lecture we have studied how to solve a quadratic equation by factorization method. In this lecture we will study how to solve the quadratic equation with the help of completing square. So for this we have some steps. We have to follow these steps to solve the quadratic equation by completing square. In step 1, we have to write the equation in the standard form. It means that the quadratic equation should be in the standard form. And step 2 will be divide the equation by the coefficient of x square if other than 1. It means that if we have a equation whose coefficient of x square is 5, 4, 3 or something else, so we have to divide both sides by that coefficient, so to make it 1x square. It means that we have to make the coefficient of x square 1. Now in step 3 we have to move the constant to the right hand side, and step 4 we have to add square of half of the coefficient of x on both sides, and step 5 simply right hand side to make left hand side as a perfect square, and then we will take square root on the both sides and we will solve it. So coming towards the example, we have given example x square plus 6x minus 40 is equals to 0, and we have to solve it by completing square. अब जैसा कि हमें पता है कि हमने स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या था कि हमने एक्स स्क्वेयर को कोफिशिएंट को 1 लेकर आना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल में ऑलरेडी एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, तो हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 में हमारे पास कांस्टेंट को हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना होता है। यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास -40 है, सो वी विल शिफ्ट इट टू द राइट साइड, so the equation will be x square plus 6x is equals to 40. now so make फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने जो x के साथ कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड बाय 2 करना होता है। अगर 6 को हम डिवाइड बाय 2 करें तो हमारे पास क्या बनता है, 3 बनता है। सो एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 इज इक्वल्स टू 40। सो ए प्लस बी होल स्क्वेयर के फार्मूले में हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। सो बी स्क्वेयर तो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, एडिंग 3 स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। सो वी कैन नाउ क्लोज द फार्मूला ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 40 प्लस 9, 3 का स्क्वेयर आपके पास 9। सो एक्स प्लस 3 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 49। सो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड वी विल हैव एक्स प्लस 3 is equals to plus minus 7. So writing it first with plus 7 and then with minus 7. So x minus 3 plus 7 will make it x is equals to 4, and x is equals to minus 3 and minus 7 will make it minus 10. So the solution set will be 4 and minus 10. These are the two roots of quadratic equation that we have found with the help of completing square method. Now we can have another example, that is 4x square plus 12x is equals to 0, and we have to solve it with the help of completing square. Now as we can see that the coefficient of x square is 4, so we have to divide the equation on both sides with 4. So to make the coefficient of x square 1, so by dividing we will have x square plus 3x is equals to 4. now x तो आपके पास होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास प्लस x इंटू 3। अब मुझे यहाँ पे 2ab चाहिए, यहाँ पे 2ab मुझे चाहिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि 2 से डिवाइड भी करता हूँ और मल्टीप्लाई भी करता हूँ। सो वी विल हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2. So as we can see that the value of a in the formula will be x and the b will be 3/2. So we have to add 3/2 whole square on both sides. So x square plus 2 into 3/2 प्लस 3/2 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3/2 होल स्क्वेयर। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज करते हैं तो x प्लस 3/2 होल स्क्वेयर, इट मीन्स a प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला बन किया हमने, इज इक्वल्स टू 3/2 होल स्क्वेयर अपनी जगह पे। टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड वी विल हैव x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/2। स्क्वेयर रूट ख़त्म हो जाएगा आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो पहले हम इसको एक दफ़ा प्लस 3/2 के साथ लिखेंगे और दोबारा माइनस 3/2 के साथ, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो 0 और -3 आएगा हमारे पास। सो दिस वाज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग with the formula we have to know what is quadratic formula। तो quadratic formula हमारे पास क्या होना चाहिए, x is equals to minus b
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। और ये स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट शोज़ द नेचर ऑफ द रूट, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बाय फार्मूला के लिए आपको सबसे पहले स्टेप में इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपके पास, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी is equals to 0. That is the standard form of quadratic equation, and we have to bring the equation in that standard form. Secondly, we will take the values of a, b, c by comparing with the standard form of the quadratic equation and put it simply in the formula. We will have two roots of the quadratic equation. So coming towards the example, solve x square minus 8x plus 15 is equals to 0. As we can see that the given equation is in the standard form, so comparing it with the general form of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c is equals to 0. So here a is equals to 1 and b is equals to minus 8 and c is equals to 15. So using quadratic formula, that is x is equals to minus b plus minus square root b square minus 4ac divided by 2a. So putting the values, we have minus into minus 8 plus minus square root minus 8 का whole square minus 4 into 1 into 15 divided by 2a की जगह हम y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे. So we can see that inside we will have minus minus plus 8 plus minus square root माइनस 8 का स्क्वायर आपके पास 64 हो जाएगा और 15 4 आपके पास 60 हो जाएगा. सो वी विल हैव x is equals to 8 plus minus square root 4 divided by 2. Square root of 4 is 2, so we will write it as 8 plus 2 plus minus 2 divided by 2. सिंपली है 8 को 2 से भी डिवाइड करें और 2 को भी 2 से डिवाइड करें तो वी विल हैव 4 plus minus 1. So writing it once with positive sign and second with negative sign, so we will have the solutions at 5 and 3. Now we can have another example of quadratic equation, and we have to solve it with the help of quadratic formula. So in this example we have given equation 4x square plus 3x. As we can see that we don't have a constant here in this equation, so by comparing method we can see that the value of a is equals to 4, b is equals to 3 and c is equals to 0. Simply by putting it in the quadratic formula we can have the solution set. That is easy. The main part of this equation was that the term constant term was 0 in this equation, so you don't have to be conscious about it because its value of c can be 0 as well. And I have patched some example photo examples with you that you can see that we can use the quadratic equation in different example. As you can see that I have patched the picture of basketball player here, and you can see the curves, the line curves, so you can have the real life example from here. So thank you so much